So hello, good evening all guys. So yeah, yesterday we have learned about the JavaScript and I thought it was a really cool session and you get to know about basic about the JavaScript. So let me first introduce myself. So I am Alok Kumar, a second year CSE student currently studying in NIT Jalandhar. सो आज का हमारा टॉपिक एपीआई है और मीन्स कि डिस्कस करने वाले हम एपीआई उसका कुछ थ्योरी पार्ट होगा 15 से 20 मिनट मतलब छोटा ही रहने का कोशिश करूंगा मैं कि जिससे बोरिंग ना हो। उसके बाद लाइव कोडिंग सेशन होगा सुपर हीरो एपीआई के भी। उसके बाद यदि टाइम बचेगा हमारे पास तो हम गिट और गिटहब के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो ओके, सो व्हाट इज एपीआई? तो मैंने एपीआई डिफाइन करने का कोशिश किया था, सुपर हीरो सीक्रेट टू सेव टाइम मनी एंड योर सैनिटी। तो देखते हैं कि एपीआई क्या होता है, इस एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे। तो ये एपीआई क्या होता है? सो एपीआई बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ क्लाइंट पार्ट एपीआई और एपीआई सर्वर। मीन्स कि क्लाइंट एग्जांपल लेते हैं कि यदि कभी हम होटल जाते हैं और वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर होता है और यदि रूम बुकिंग करना होता है तो हम रिसेप्शन काउंटर पे पूछते हैं कि क्या आपके पास रूम अवेलेबल है या नहीं है, ऐसा पूछते हैं। तो वो यदि रूम अवेलेबल होता है तो वो अपना मतलब डेटाबेस में चेक करते हैं जो काउंटर पे बैठते हैं कि हाँ कि रूम अवेलेबल है। एक सिंपल सा उनके चेहरे पे मुस्कान होता है और वो अच्छा सा रिप्लाई देते हैं कि हाँ रूम अवेलेबल है। नहीं होता है तो वो सिंपली बताते हैं सॉरी अवेलेबल नहीं। तो ये एपीआई जो है वही बस वो बीच वाला जो रिसेप्शन काउंटर पे बैठते हैं वही सेम उसको रिलेट करने का कोशिश करेंगे कि एपीआई और वो दोनों बात बराबर है। तो ऐसे एक क्लाइंट है कि एक रिक्वेस्ट भेजता है एपीआई के पास, सिमिलरली जैसे कि हमने रिसेप्शन काउंटर पे उनसे पूछा कि यदि होटल में सीट अवेलेबल है कि मतलब रूम अवेलेबल है कि नहीं। तो वो रिक्वेस्ट उसके बाद फिर एपीआई मीन्स कि वो बीच वाले बंदे जो काउंटर पे बैठते हैं फिर उसके बाद सर्वर डेटाबेस हो गया कि चेक करते हैं, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स आता है। तो एपीआई यही है। फिर उसको टेक्निकल टर्म में यदि समझने का कोशिश करें तो यार ये बड़ा अच्छा सा एक मीम है ये कि इफ इट वर्क डोंट टच इट। तो इसे फर्स्ट लॉ ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहते हैं कि इफ इट वर्क डोंट टच इट। कि लाइक यदि आपको कोडिंग के बारे में आइडिया है तभी आप कोड को टच करो, नहीं तो यदि रन कर रहा है तो छोड़ दो, वरना वो मुश्किल हो जाता है कि फिर करना। लेकिन ये भी होता है कि यदि हम उसे देखेंगे नहीं मतलब कि छेड़खानी उसके साथ नहीं करेंगे तो सीखने को नहीं मिलेगा। फिर भी ये एग्जाम्पल है, चेक करते हैं। बैक एंड हो गया, ये फ्रंट एंड हो गया और बीच में ये रेस्ट एपीआई, दोनों का कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली रेस्ट एपीआई को हम मतलब रेस्ट एपीआई के बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, एपीआई के तौर पे भी देख लेते हैं इसे। सो हाँ, टेक्निकल टर्म यदि एपीआई को समझें तो लाइक अभी डेली में लाइफ में हम चेक करते हैं कि जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी और उबर ईट्स एक्सेट्रा, ये सारे ऐप होते हैं। तो उन्हें मैप की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ लाइक कि हम जोमेटो पे कुछ ऑर्डर देते हैं और अपने पास एक ट्रैक लिंक रिसीव होता है कि हम ट्रैक कर पाएंगे कि अपना ऑर्डर कहाँ है। तो मान लो कि यदि वो तो है नहीं कि जोमेटो अपना जाएगा सेटेलाइट लगाएगा ट्रैक करेगा कि हाँ भाई कि यहाँ पे ये आ गया मतलब कि खुद से, तो जितनी आमदनी नहीं होगी उससे ज़्यादा तो उसका खर्चा होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। फिर जोमेटो क्या ही कर सकता है, तो उसके पास गूगल मैप है। तो गूगल मैप से जाके यदि वो पूछे कि मुझे भाई तुम अपना एक्सेस दे दो, तो गूगल मैप क्या करेगा, सारा एक्सेस तो उसे दे नहीं सकता। फिर जैसे स्विगी हुआ उसको भी गूगल मैप एक्सेस दे दिया, जोमेटो को भी एक्सेस दे दिया। तो कल हो ना हो कुछ वो मैप में लोकेशन चेंज कर दे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन गूगल मैप निकाला गया, वो अपना एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड किया और दैट इज कॉल्ड द गूगल मैप एपीआई। सो गूगल मैप एपीआई बेसिकली क्या करता है कि जोमेटो से वो एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई तुमको कितना एक्सेस चाहिए मुझे बता दो। उसके बाद फिर गूगल मैप एपीआई जाएगा गूगल मैप का ओरिजिनल सर्वर के पास, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इफ कि वो यदि ओके होगा वो चेक करेगा कि हाँ मुझे इतना देना। उसके बाद फिर गूगल मैप जो है वो एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा गूगल मैप एपीआई को। फिर वो एपीआई जो है वापस जोमेटो के पास सेंड करेगा, पता चल जाएगा कि हाँ कि कहाँ पे ये आ रहा है, तो वो पता चल जाएगा। तो ये टेक्निकल टर्म एग्जांपल हो गया एपीआई का। सो एपीआई डज नॉट टेल हाउ, इट जस्ट डिलीवर द फाइनल प्रोडक्ट। तो एपीआई से बस हमें पता मतलब कि जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना हम इन्फॉर्मेशन एपीआई को रिसीव दे मतलब बताते हैं कि इतना चाहिए, तो बस वो डिलीवर करता है। वो बताता नहीं कि ये काम हो कैसे रहा, कि बैकएंड में ये चल कैसे रहा, बस वो डिलीवर कर देता है कि प्रोडक्ट। सो अब चैलेंजेस ये है कि मान लो कि लाइक बुक जैसे कि हम पीवीआर का टिकट बुक करते हैं, तो पीवीआर का टिकट यदि हम बुक करें तो बहुत सारे बुकिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक बुक माई शो हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजन हो गया, तो एक्सेट्रा। तो अब पता कैसे चलेगा कि कब किसका कितना रिक्वेस्ट आ रहा है? तो उसके लिए हम एपीआई की लाए, तो एक यूनिक कोड होता है सबके पास कि ये प्रोवाइड क्या करता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और सिक्योरिटी। कि मान लो कि कल होके किसी ने मतलब कि बुक किया तो हम वो सीट को रजिस्टर कर देंगे कि हाँ ये बुक जो है वो बुक माई शो से हुआ, ये पेटीएम से हो गया,
तो इसी तरह से तो वो रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए वो एपीआई की होता है। तो समझ गए एपीआई की, तो वो सबका एक यूनिक की होता है। तो बहुत सारे जैसे कि एपीआई है, वो एपीआई की प्रोवाइड भी करते हैं, और कुछ पब्लिक होते हैं उनका एपीआई की होता भी नहीं है, कि वो बिना एपीआई की का ही हो जाता है। तो चलो एपीआई को एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल करें। ठंड का मौसम है, चाय पीना तो सबको अच्छा लग ही रहा होगा। चाय पीना सबको अच्छा लग ही रहा होगा कि हाँ ठंड का मौसम है, चाय पीते हैं। तो एपीआई को क्यों ना हम चाय के साथ रिलेट करते हैं। तो मतलब कि कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे हम एपीआई को चाय के साथ रिलेट कर सकते हैं, या जल्दी से, यदि किसी को पता होगा तो जल्दी से बताओ। तो यदि रिलेट करने का कोशिश करें तो चाय और ये दोनों में चाय और ये एपीआई में दोनों में कॉमन ये है कि दोनों रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के भूखे होते हैं, कि उन्हें मतलब कि एपीआई को भी हम रिक्वेस्ट देते हैं, उसके बाद ही रिस्पॉन्स आता है। सिमिलर यदि कोई गेस्ट आए, उन्हें चाय पिलाना होता है, तो यदि जब तक हम उनसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं तो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता नहीं है। तो दोनों सेम चीज़ हम उसे कर सकते हैं। सो ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि एपीआई इज फाइन बट वाई, क्यों हम एपीआई को यूज करते हैं। तो देखते हैं कि इसका इफिशियंसी, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, सिक्योरिटी, एडेप्टेबिलिटी चेक करेंगे कि वन बाय वन ये सब होता है कैसे, आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेब एपीआई की, जैसे कि आरपीसी हो गया, रिमोट प्रोसीजर कॉल, क्लाइंट कैन कॉल द फंक्शन ऑन द सर्वर। तो ये जैसे कि कैसे काम करता है, तो आरपीसी बेसिकली दो ही टाइप इसमें होता है, एक गेट हो गया और एक पुट हो गया। तो होता क्या कि क्लाइंट साइड में हमारा मतलब कि जैसे कि मान लो कि ऐड करना है, तो ऐड करने का जो फंक्शन है वो हम बनाते हैं सर्वर साइड में हम बनाते हैं फंक्शन। उसके बाद वो क्लाइंट साइड हो गया, क्लाइंट साइड में सिंपली हम वो फंक्शन कॉल करते हैं, तो उसके पास जाता है रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स देता है। तो ये आरपीसी हो गया। उसी तरह आरएमआई भी होता है, क्लाइंट कैन कॉल। तो सिंपली ये जितने प्रोसीजर होते हैं वो उनके पास सेट ऑफ गाइडलाइन होता है या प्रोटोकॉल होता है, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो अभी फेमस है रेस्ट एपीआई, उसे हम रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर करते हैं। तो आज का सेशन बेसिकली वो रेस्ट एपीआई के बेसिस पे होगा। और ये रेस्ट एपीआई जो होता है वो मतलब कि जो नए नए वेब डेवलपमेंट करने आते हैं, लाइक कि हम लोग, तो उनके लिए रेस्ट एपीआई यूज करना ही आसान होता है। और ये एक पब्लिक एपीआई है, तो ये आसान होता है। तो और ये CRUD ऑपरेशन पे बेस होता है। तो डिस्कस करते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। सो ओके, तो रेस्ट एपीआई क्लाइंट साइड हो गया, सर्वर साइड हो गया, और ये रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज करता है एचटीटीपी मेथड। और ये लाइक चेक कर सकते हैं गेट, सर्वे, पोस्ट, डिलीट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्लाइंट साइड ये कंसिस्ट किया, एक सर्वर हो गया। उसके बाद जब हम रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर साइड को, तो ये जेसॉन के फॉर्म में डेटा करता है। तो जेसॉन समझते हैं, जेसॉन क्या होता है। तो जेसॉन बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को हम जेसॉन कहते हैं। तो जेसॉन के पास एक आईडी होता है और वो की मतलब की होता है, और उसके रिस्पॉन्स में वो जैसे कि, तो सिंपली हम मान लो कि ऐसे और जूम करने का कोशिश करें इसे, तो ये रहा जैसे कि सर्वर आईडी 123 स्कोर 9 है। तो एक सिंपल सा, तो ये ह्यूमन रीडेबल भी है और मशीन रीडेबल भी है। तो यदि सर्वर में मैंने क्लाइंट रिस्पॉन्स वो रिक्वेस्ट किया सर्वर को, और सर्वर जो है जेसन का फॉर्मेट में डेटा दिया, तो उसे हम यूज कर सकते हैं अपना जो भी वेबसाइट बना रहे हैं या कोई ऐप बना रहे हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं कि हाँ डायरेक्टली आईडी से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए अभी मोस्ट मतलब फेमस जो है वो जेसॉन ही बहुत डेटा फॉर्मेट जो पहले हम यूज करते थे एक्सएमएल, वो भी चेक करते हैं कि एक्सएमएल का फॉर्मेट कैसा होता है। तो रेस्ट एपीआई क्लाइंट सर्वर बेस्ड है। वो अभी जस्ट हमने समझा कि क्लाइंट जो है वो एचटीटीपी के फॉर्म में रिक्वेस्ट देता है और सर्वर जो है उसके रिस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद ये स्टेटलेस हो गया। कि स्टेटलेस कहने का मतलब ये, यदि इसे समझने का कोशिश करें तो मान लो कि कभी हम जाते हैं, अमेजन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पे यदि हम कोई सामान परचेज करते हैं तो सबसे पहले ऐड टू कार्ट में कुछ सामान ऐड करते हैं। फिर वहाँ पे बिल बनता है कि हाँ आपका 1200, 1500, मतलब कोई भी अमाउंट हो सकता है कि इतना का आपका बिल हुआ। उसके बाद जस्ट हमें रिडायरेक्ट किया जाता है पेमेंट पेज की तरफ। पेमेंट पे फिर वहाँ पे यदि हम वापस बैक करने की कोशिश करते हैं तो वो बैक हो नहीं पाता है। तो यही होता है कि मतलब, तो लेकिन रिडायरेक्ट तो जल्दी हो पाता है। तो यही स्टेटलेस करने का यही मतलब है कि तो रेस्ट एपीआई मतलब ऐप जो है वो इस चीज़ को अचीव करने में मदद करता है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो सके कि एक वे पे से दूसरे वे पे जाना। तो इसका कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, चेक करेंगे। उसके बाद फिर कैसे हो गया, कैसे मतलब कि कुछ जो बार-बार जो डेटा आ रहा है उसे हम स्टोर करेंगे जिससे कि उतना ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर यूनिफॉर्म इंटरफेसेस का होता है। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब हो गया कि मतलब इजीली टू एक्सेसिबल हो गया, ऐसे कुछ मतलब हो गया। फिर कोड ऑन डिमांड हो गया, उसका मतलब कि कुछ
लाइक HTML में भी ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट हम डायरेक्ट करेंगे और उसे हम रेंडर कर सकते हैं। तो ये मतलब तो रेस्ट जो होता है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया। यदि जल्दी रिवाइज यदि करने का कोशिश करें तो रेस्ट एक क्लाइंट सर्वर मॉडल हो गया। और वहाँ पे हम CRUD मेथड से यूज करते हैं HTTP कोड। HTTP जो होता है वो बेसिकली CRUD पे बेस्ड होता है। तो यदि जो पहले कभी सीखे होंगे वेब डेवलपमेंट उन्हें पता होगा कि CRUD क्या होता है। फिर भी हम CRUD समझने का कोशिश करते हैं कि CRUD स्टैंड फॉर, तो हेयर C स्टैंड फॉर द क्रिएट, R स्टैंड फॉर द रीड, U स्टैंड फॉर द अपडेट एंड द D स्टैंड फॉर द डिलीट। सो क्रिएट हम पोस्ट मेथड से करते हैं। हम यदि पोस्ट मेथड से मेरे पास यदि कुछ मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक डेटाबेस है, ठीक, वहाँ पे हम पोस्ट मेथड से कुछ एक नया क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, कुछ डेटाबेस में ऐड करने करेंगे, तो वो पोस्ट मेथड से हम कर सकते हैं। फिर एक रीड हो गया। रीड में होता है क्या कि मान लो कि कुछ डेटा वहाँ से मुझे एक्सेस करना है तो हम गेट मेथड से वो एक्सेस कर सकते हैं। फिर पुट मेथड आ गया कि कुछ डेटाबेस में हमें अपडेट करना हो तो हम पुट मेथड का यूज करते हैं। फिर डिलीट हो गया, कुछ डिलीट करना। तो ये बेसिकली 4 बेस्ड है, मतलब HTTP मेथड, और ये ईजी होता है करने के लिए, तो इसीलिए रेस्ट इतना पॉपुलर है। सो ऐसे कुछ होते हैं। एपीआई का जो लिंक आता है अपने पास ऐसे होता है, एपीआई गेटवे यूआरएल हो गया, ये आपका कंटेंट हो गया। फिर वर्जन, एपीआई वर्जनिंग भी अच्छा सा एक टॉपिक है, तो आज उतना टाइम तो है नहीं कि वर्जनिंग हम सीख पाएंगे कैसे क्या होता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद रिसोर्स हो गया कि मान लो कि डेटाबेस में यूजर के जैसे कि यदि कोई काम किए होंगे तो उन्हें पता है, जैसे कि मोंगोडीबी, वहाँ पे हम यूजर का इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो यूजर नाम का एक मान लो रिसोर्स हो गया, वहाँ पे एक आइडेंटिफायर हो गया, ये वैल्यू होगा, तो सबका पार्टिकुलर की है। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इस यही बेस ऐसे ही होता है एपीआई गेटवे का यूआरएल, जो कि भी नेक्स्ट में गौरव आप लोग को समझाएगा कि हम कैसे करते हैं वो लाइव कोडिंग सेशन में, तो पता चल जाएगा कि किस तरह से हम फेच करते हैं। तो ये बेसिक मतलब कि लास्ट टाइम मैंने जब ये सीख रहा था जावास्क्रिप्ट तो उस टाइम ये मेरा प्रोजेक्ट का ये कोड है, मतलब ये एक्सप्रेस जेएस में है, पर आज हम वेनिला जेएस यूज करेंगे, तब भी समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। ये एपीआई डॉट गेट, मतलब कि गेट से मान लो कि हैज ये अवार्ड, यदि अवार्ड पेज पे जाएंगे तो आपको ये बता रहा है कि रेंडर करेगा अवार्ड सेक्शन के बारे में, जो कि पहले से ही एक ईजीएस फॉर्म में रहेगा। फिर यदि आप कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो वो कॉन्टेक्ट रेंडर करेगा। कंपोज में जाएंगे तो आपको एक कंपोज सेक्शन पे, जैसे कि मान लो कि ये मेरा ब्लॉगिंग पोस्ट का था, तो यहाँ पे कंपोज में गया तो एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया, वहाँ पे ये टाइटल रहा। तो इसी तरह से ये रिक्वेस्ट जो होते हैं सारे करते हैं। तो ठीक, उसके बाद होता है कि HTTP स्टेटस कोड, कि मान लो कि हमने तो रिक्वेस्ट भेज दिया कि HTTP मेथड जो था उसे हमने कर दिया कि क्या करना है वो एपीआई कर दिया। फिर कैसे पता चलेगा कि ये हुआ नहीं हुआ, क्या एरर है, तो उसके लिए कुछ बेसिस होते हैं कोड के, जैसे कि 1 से स्टार्टिंग जो कोड होता है उसे हम कैटेगराइज करते हैं इन्फॉर्मेशनल में। फिर 2 से स्टार्टिंग जो होता है उससे सक्सेस, यानी कि 1 ये कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये हुआ। फिर 2 सक्सेस, यानी 202 बहुत फेमस है कि बताता है कि हाँ आपका ये सक्सेस हो गया। 3 से जो स्टार्टिंग कोड होता है वो रीडायरेक्ट करता है कि मान लो कि NITJ का पुराना वेबसाइट था, उसके बाद वो नया वेबसाइट में अपग्रेड हुआ, तो ये पुराना जो है नया पे रीडायरेक्ट करेगा, तो वहाँ पे कोड आता है 30। यदि आप देखेंगे कंसोल सेक्शन में जाके तो ऐसा पता चल जाएगा कि वो ये रेंडर करता है कि हाँ रिडायरेक्ट आपको क्या जा रहा है एक नया वेबसाइट पे। उसके बाद 4 से स्टार्टिंग कोड, जैसे कि 404 पेज नोट फाउंड, ये अक्सर एरर आता रहता है कि मान लो कि आपने कुछ ऐसा सर्च कर दिया जो कि डाटाबेस में नहीं है, तो वो क्लाइंट आपके तरफ से एरर है तो वो क्लाइंट एरर आ गया, या सर्वर में भी कुछ एरर होता है तो वो 5 से स्टार्टिंग होता है कि आपको बता देगा कि ये। तो यदि एपीआई का हम हिस्ट्री जानने का कोशिश करें तो ये मतलब एपीआई जो हुआ 2000 के अराउंड आया था, और 2000 के सबसे पहले वो सेल्स फोर्स था, वो एपीआई आया था। तो पहले जो था वो सोप बहुत फेमस एपीआई था, उसके बाद रेस्ट जो है वो हाल ही फिलहाल का है। तो वो सोप में होता था क्या कि वो ज़्यादा सिक्योर्ड वे था, इसका मोर बैंडविड्थ होता है, ये स्टेट भी मतलब कि ये स्टेट मेंटेन करता है, रेस्ट जो है वो स्टेट मेंटेन नहीं करता है। और सोप जो था वो अभी भी चल रहा है, पर वो लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए, मतलब सोप का बेसिकली वो रेस्ट से इसमें अच्छा है ना कि रेस्ट में उतना ज़्यादा सिक्योरिटी है नहीं, कि इसे यदि साइबर अटैक हो या कुछ हो तो रेस्ट को जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एक पब्लिक एपीआई। पर सोप जो होता है तो वो एक पब्लिक एपीआई, तो उसमें एक अच्छा सा लेयर होता है। तो लाइक यदि देख सकते एग्जांपल से कि हमने रेस्ट को एक पोस्ट कार्ड माना है और सोप को एक इन्वेलप माना है, तो उनसे पता चल सकता है कि हाँ ये सोप कितना ज़्यादा सिक्योर है और रेस्ट जो है वो ये था। पर रेस्ट का तभी बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक, तो समझ लिया हमने। उसके बाद या XML और जेसन फॉर्मेट समझने का कोशिश करते हैं। तो ये रहा XML, तो ये HTML बेसिस पे होता है कि लाइक चेक कर सकते हैं कि सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करने की टैग हो गया इम्प्लाइज फिर नेम इस तरह से। तो उसके बाद जेसन ये हो गया। तो जेसन एक अच्छा रीडेबल होता है कि फाइल इसके बेसिस पे। सो ओके, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोग को बेसिक पता चल गया होगा कि एपीआई क्या होता है कैसे होता है, मतलब कि तो यदि सिंपल रिवाइज करने का कोशिश करें तो एपीआई क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक
पाथ मतलब कि एक बिचौलिया की तरह कह सकते हैं कि काम करता है। आपका रिक्वेस्ट वो लेगा, उसके बाद वो सर्वर के पास जाता है, यदि उसके रिगार्डिंग वो आपका डेटा है तो आपको रिटर्न करेगा, नहीं होता है तो एक आपके पास एरर मैसेज आएगा। तो वही एपीआई है। तो हम सुपर हीरो एपीआई से एक लाइव प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सो नाउ आई एम हैंडलिंग दिस टू द गौरव। थैंक यू। A great explanation by Alok. I hopefully think you all understand pretty well. So hopefully I'm audible first of all. Let me start with my introduction. My name is Gaurav Upadhyay, currently in second year, pursuing information technology. तो आलोक ने काफ़ी कुछ बता दिया तुमको एपीआई के बारे में। व्हाट आई वांट यू टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द डिस्क्रिप्शन द कमेंट सेक्शन एंड देयर इज अ फाइल where you can actually download some prerequisite materials. I hopefully say you have seen it already. So please do download it and जब तुम उसको डाउनलोड करोगे तुम्हारे पास एक फाइल आ जाएगी something like this. There will be an index.html and a CSS file, right? So इसके नाम हमने तुमको थोड़ा सा टेम्पलेट बना के ऑलरेडी दे रखा है. So like you can actually begin from something of a good level. So हम इसको स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना. Let's इसमें अंदर अभी कुछ है नहीं, like it's just a bland basic template. So yeah. तो बिफोर हेडिंग इनटू दिस फाइल मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ कि एक्चुअली इसके अंदर डॉम ट्री वगैरह क्या है इसका. सो बेसिक एचटीएमएल व्यू अगर तुम विदाउट सीएसएस वगैरह देखोगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट? नॉट सो प्रीटी, राइट? इसके अंदर कुछ काम नहीं है, बट आई जस्ट बेसिकली एक्सप्लेन यू व्हाट थिंग्स आर डूइंग राइट हियर. सो दिस इज बेसिकली योर टाइटल. जस्ट वन, तुमको पता ही होगा H1 या कुछ भी यूज करके तुम ये टाइटल लगा सकते हो. दिस इज बेसिकली अ फॉर्म. वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्म जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है और एक सबमिट बटन है. देयर इज एन इमेज जो तुम इसमें अगर देखोगे इट इज विद सीएसएस. सो इसके अंदर एक इमेज भी आ रखी है, बट दिस इज जस्ट बेसिक एचटीएमएल. इफ तुम सिर्फ एचटीएमएल फाइल रन करते हो अपनी तो. एंड दिस इज नेम ऑफ योर हीरो, your power stats, and these are 4 buttons we have basically put it. So it's a very basic HTML view. इसका हम DOM tree देखेंगे. अगर अब तुम फाइल खोल के देखोगे यू विल सी दैट द मेन एचटीएमएल फाइल के नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं. जो भी डॉट के बाद चीज लिखी है लाइक फॉर्म डॉट हेडर सर्च, ये बेसिकली क्लास नेम है. जो तुम बेसिकली क्लास नेम्स यूज नहीं करते लाइक क्लास इज इक्वल्स टू लगा के. सो बेसिकली उनका क्लास नेम है टू यूनिकली आइडेंटिफाई दिस. एंड दिस इज योर बेसिकली योर एंटायर डॉम ट्री. इसके अंदर हमारा बेसिकली अगर मैं तुमको ये दिखाऊं, दिस इज योर ऐप सेक्शन जो हमने बना रखा है. सो इसमें ऐप होगा, उसके अंदर हेडर होगा. सो दिस इज बेसिकली योर हेडर सेक्शन. And similarly you can understand pretty well yourself if you know HTML CSS कि ये फ्लो क्या है. जावास्क्रिप्ट का मेन फंक्शन यही होता है कि वी हैव टू मैनिपुलेट दिस DOM, राइट? सो हम उसको कैसे करेंगे? टुडे वी विल यूज मेनली टू और थ्री आई गेस selectors. First is query selector जो तुमने किया होगा, and second is get element by ID or something like this. So like few we'll use to actually manipulate this DOM according to our needs to make it more user friendly and more responsive. So let's get started with what API is basically. आलोक ने तुमको काफी अच्छा समझा रखा है ऑलरेडी API क्या होता है, बट आई विल गिव वन मोर ओवरव्यू कि जो हमारी वेबसाइट होगी वो एक गेट रिक्वेस्ट भेजेगी. यू वुड हैव ऑलरेडी नोन कि गेट रिक्वेस्ट क्या होती है बाय आलोक. तो गेट रिक्वेस्ट इज बेसिकली एक हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कुछ चीज पाने के लिए. इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ यूआरएल और अदर वेज. एंड उसका एक की अटैच करते हैं ऑलवेज, विच यू ऑलवेज नीड टू नो बिकॉज एपीआई की से तुमको ऑथेंटिकेट और लाइक सेशंस बनाता है तुम्हारे लिए कि तुम ओवरक्राउड ना कर दो उसके सर्वर्स को. एंड ये तुमको रिस्पॉन्स में देता है एक जेसन फाइल which is basically a response. Like it doesn't give you a JSON file, it gives you a response which you convert into JSON file to use it in our JavaScript code. तो ये तुमको बेसिक मैंने एपीआई का बता दिया है. अब हमने क्या क्या करना है, दैट इज द मेन फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सर्टेन लाइक इवेंट्स बनाएंगे हम. सो लाइक इफ यू सी दीज बटन्स डोंट डू एनीथिंग, राइट? So first of all, we have to make a focus button and unfocus. Like we have to focus on this. Like कुछ पता लगे कि हम इसको बटन को क्लिक किया हमने या कुछ किया है. Um, and let's start building, and then progressively we'll see that what we have to do, right?
So let me just create one new file and name it app.js. Okay, so हम पहले टैब just to give you context, like मैं कैसे कर रहा हूँ, because हमने ये चीज edit करनी है which comes under about, right? I think so here div application body and head, तो हमको इन चीजों को select करना है. So we use query selector for that. So like let's say tab header, so we'll go with document dot query selector, and because ये multiple है, ये एक नहीं है, so we'll go with all ताकि हमको सारे मिल जाए एक साथ. And the name of this I think so was, यहाँ से देख लेते हैं, tab header single, right? So we have to select this tab header single. Similarly we have to create for tab body also, like जहाँ पर हम actually stats दिखाएंगे अपने superheroes के. So this goes by like this unordered list. So we'll do it, what's the name, tab body single. Yeah, so we have selected both of them. If you want to actually see that whether they have been selected, like let's just console log them, and let me just run the live server real quick. Yeah, so this is some different error, but we have got our list which is not selecting anything by some chance. Tab header single, I think that was the name. Yes, some issue is there, I think so, but let's आगे पहले कोड लिख लेते हैं, देन we'll बग फिक्सेस दोबारा कर लेंगे. तो अभी इसके बाद हमने करना है, यहाँ पर अगर तुम देखो हमारा फ्लो क्या है, तो आर फ्लो इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट दैट अनफोकस एंड फोकस थिंग जो हम इससे अचीव कर लेंगे. दीज आर ओनली थिंग वी रिक्वायर राइट नाउ. Second thing is we have to get input from search bar too, so we'll get the search bar components also, like इसके अंदर search, we'll like write search form and document, and because search form तो एक ही है हमारे पूरे form के अंदर, you can see this is only one form, so we'll just use query selector for this. And the name should be, let me just reiterate to my name, yeah, so हमारे form का name है app header search, so it's app header search. And we'll also create a search list. जब हम इसको टाइप करेंगे तो like there should be some kind of a visual representation कि कौन से heroes का name similar होते हैं कुछ. So we'll also call upon this. We have already pre-styled it for you, so you just have to call it. And it is, you will use get element by id because id लगी हुई है, if you can see right here. So we'll call it by id, get element by id, and it is search. A search list actually, yeah. So this is all our 4 done. Get element by id, why is it showing some error? Yeah, it actually fixes it. So we can just see that whatever is we have selected actually it does exist. So tab body and search form and a search list.
So yeah, we are getting a lot of things except for this, I think so. Should I put this thing? No. Or it is just search. I think it was just search. This is selecting this thing. This is not selecting anything. Let me just real quick go to my previous code base and get element by. It is getting right there, but some issue, I guess. Yeah, we are getting now. And first one, yeah, it is called as head rather than header. So small mistakes. Yeah, we are getting all. So now we have gotten all. What things we have to add to this website is basically that we should get a response, right? So I'll show you one basic function. We'll write a basic function which will take nothing for now, but its name is set active. What it does is basically we'll select a tab header and we'll create a small variable that is called as active tab. इसकी वैल्यू हम पहले 1 रख लेंगे बिकॉज इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है. अगर तुम देखोगे बाद में तुमको बताऊंगा कि क्यों ये 1 है अभी करंटली, बट इसकी वैल्यू हम एक्टिव सेशन डॉट एक्टिव टैब -1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड एंड इसका था शो और नो सॉरी इट्स इट आई थिंक सो क्लास नेम वाज एक्टिव टैब. या तो अगर हम इसके अंदर अब इस फंक्शन को रन करते हैं कहीं भी, सो व्हाट इट डज इट एक्चुअली शोज एन इंडिकेटर, राइट है. अभी इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं कि हर इसके साथ इंडिकेटर दे. सो व्हाट वी कैन डू इज क्रिएट एन इवेंट लिस्नर, राइट. सो tab header dot for each basically is a for loop kind of a thing. इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जो फंक्शन कॉल होगा जब भी ये इवेंट रन होता है. फॉर ईच फंक्शन और ऐड होगा टैब हेडर, प्लीज ब्रो, tab header item. So basically what it does now is कि wait a second, yep, each इसके पास जाएगा and we'll get one this tab header item, this individual element. What we can do to this individual element is add a event listener. So we can add a event listener. What this event listener would be in this case would be click, normal click, and we'll create another function which basically calls this set active function. So set active, and before we set active this, we will update the active tab value to tab header item dot. इसके अंदर हमारे पास एक डेटा सेट प्रॉपर्टी होती है. If you don't understand it, so you can just see it works right now, but now I'll explain you why this data set we are using. Basically we have created custom property. अगर तुम यहाँ जाके देखोगे अपनी HTML फाइल के अंदर तो तुमको डेटा आईडी मिलती है. तो बेसिकली यू कैन क्रिएट कस्टम प्रॉपर्टीज. अगर तुमको कॉल करना है, कुछ स्पेशल वेरिएबल्स वगैरह देने हैं या फिर कुछ भी करना है, यू कैन एक्चुअली यूज दिस काइंड ऑफ डेटा सेट एंड वट एवर योर नेम इज गिवन. सो डेटा डैश वट एवर यू वांट टू गिव. सो दिस इज बेसिकली हाउ वी आर गेटिंग इट. सो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड वन थिंग यू आर सेइंग लाइक अगर मल्टीपल क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरे अपडेट नहीं हो रहे. सो व्हाट वी कैन डू, मेक अ न्यू फंक्शन कि अनएक्टिव ऑल. So what it does is, let me just create it for real quick.
या सो थोड़ा तुमको समझ में आ चुका होगा ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ करने की। सो बेसिकली क्या किया है कि जो हमने एक्टिव टैब दिया था इसको रिमूव कर लिया जब भी कोई एक न्यू क्लिक हमको इंट्रोड्यूस हो रहा है। सो यू कैन जस्ट सी नाउ इट वर्क्स फ्लॉलेसली विच यू वांटेड। एंड इस सेम चीज को हमने ऑलमोस्ट करना है फॉर पावर स्टैट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट रिव्यू यू व्हाट पावर स्टैट्स आर लाइक। अभी दिख नहीं रहा होगा बिकॉज वो हिडन है थोड़े से। So we'll create a function to show those classes, right? So again we'll create a function to show body basically. And what it does is we'll use this tab body dot class list dot add. Okay, because इसके अंदर बहुत सारे हैं। अगेन we'll use active element जो हमारा active है currently, उसको ही हम दिखाएंगे। So active -1 dot class list dot add, and this is show tab. So we'll call this also just for demonstration right now, show body. So you can just see अब हमारी बॉडी हमको शो हो रही है बिकॉज एक शो टैब क्लास है, बेसिकली कुछ करती नहीं है। इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम डिस्प्ले नन टू डिस्प्ले ब्लॉक और वट एवर इट इज। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये हिडन आइटम्स थे वो हमको अब दिखने लग जाते हैं, दो इट डज नॉट रियली कॉरस्पॉन्डिंग विद आर दीज थिंग्स। सो विल मेक इट कॉरस्पॉन्ड टू दैट ऑल्सो। So we'll create a function, or like we'll create a basically event listener for this also. So it's tab body dot add event listener. Wait, because this is also an array of objects, so we'll again use for each. You have to do similar like in what you have done previous, so you don't need to worry about what is happening right now. You will get like it will be similar to previous one. ओके, वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट इसमें तो कोई क्लिक वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो हमको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू क्रिएट राइट अवे हियर। सो we can just add this function's name right here, so show body. Yeah, so what is happening is you can just see अब ये नीचे जा रहा है because you have to unselect also before doing so. So let me just unshow body एक function बना देता हूँ real quick. So what it does is function unshow body yeah, so it should solve this problem. So
what is basically is doing is we are create लेकिन मैं तुमको थोड़ा brief overview दे देता हूँ. Set active and unactive all क्या करता है, ये ऊपर हमारे इन buttons के लिए है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे दूसरे buttons unactive हो जाने चाहिए और ये active हो जाना चाहिए. That's basically what we have created the function for. एक इसमें एक हमने event listener ऐड किया जिसका नाम है click. तो जब भी क्लिक होगा we'll do this function, it will perform this function. What it will do is unactive सबसे पहले सबको unactive कर देगा. Then active tab को जो हमारा एक वेरिएबल है इसको सेट कर देगा क्या, जो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा ये नंबर है उसके अकॉर्डिंगली, राइट. एंड then it will set active the latest one, which is whichever it is. And for body, this part is a body. It will first of all unshow any body which is already there, and it will show the new body which is only, it should exist only one. So we have created this basic layout. Now हमारा थोड़ा सा API वाला part अब से शुरू होता है. This is basic JavaScript. So now हम search bar पे उसमें आ जाते हैं. So for search bar, like how I explained you, we have to create first of all an input field, like कि हमको input लेना है सबसे पहले, right? So yeah, so you have to take the input first of all. एक बार तो मैं GDC stream check कर लेता हूँ. Yeah, I think it's working, right? तो so search form से हम इसको करेंगे. So function would be something like search form dot add event listener, and we'll have a key up event. Key up event is basically when you click a key and you just उठाते हो हाथ उससे, so that's a key up event, and we'll tie it to a function. That function would be something like so basically we want some input right here, and that should correspond towards that thing, right? So we'll create a function something like fetch, or like how should I explain you to this? So there is a search list basically जिसके अंदर तुम्हारा सर्च लिस्ट ना अभी यहाँ पर थोड़ी सी मतलब है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती. Basically what it'll do is give us a recommendation type of thing through which we can click things. So we are going to make that as well. So search form dot event dot what we call it, search form dot search dot value. So basically this value is something जो हम इसमें पुट करते हैं, राइट. दैट्स बेसिकली वैल्यू, एंड वी विल शो आइटम बेस्ड ऑन दैट वैल्यू. और वो वैल्यू हम कैसे करेंगे, वो API fetch से करेंगे. सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ फंक्शन. देयर इज अ कांस्टेंट URL आल्सो, लाइक जो हम फेच के लिए कर रहे हैं, लाइक एक URL के अंदर हम फेच रिक्वेस्ट भेजेंगे. इफ आई हैव इट, हैव आई नॉट मेंशनड एनीवेयर? Yeah, so I have to take it from my this code. So the URL is this. You can get this in this website also, but right now we'll just try to use it right here. So basically इसके अंदर हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे. So this is the ID or whatever you want to call it. और इसके अंदर ये जो हमारी ये पार्ट होता है इसको API की कहते हैं. You can copy it if you want to, because अगर तुम इसके वेबसाइट में जाओगे you have to create a Facebook account login. Otherwise you can just copy this and go ahead with it.
सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ फेच रिक्वेस्ट, जो हमने आलोक ने तुमको बताई होगी कैसे फेच बनाते हैं. So this is how we create it. This is just basically checking that whether response is correct or not. I'll just basically explain you what this is in a bit. Then we'll just throw an error, throw new error. And if it passes this, then it is going to go to this function, which is basically a data function. So if data dot response, this is also basically checking whether response is success. This is basically, this checks whether network problem occurred or not. This checks whether the server, like server के अंदर internal problem अगर है तो response के अंदर success या error के अंदर दे सकता है. If it is success, then we will create a function. अब इसको थोड़ी देर में wait करते हैं, but first of all we'll cache the error. Like if say it throws an error, so we'll catch it using this function. एंड इफ इट इज सक्सेस, लाइक हमने यहाँ से वैल्यू अपनी पास की थी, जो भी स्ट्रिंग होगा यहाँ पर, सो लाइक ABCD whatever, इट विल गो पास टू दिस थिंग. इट विल गो एंड गेट रिक्वेस्ट की एक सर्च रिक्वेस्ट भेजेगा उसको कि ये चीज़ हमारे एग्जिस्ट करती है, एंड जस्ट टेल मी द रेलिवेंट वन विच इज क्लोजर टू इट. Obviously this function actually sends that fetch request, and the response is basically, if I can explain it to you in this term, like I'll just show you a real quick how the fetch request is sent. So जब तुम देखोगे ना ये रिस्पॉन्स करता है तो तुमको स्टेटस आता है, स्टेटस तो ओके आता है. व्हेन दिस बेसिकली ओके मींस व्हाट वी आर चेकिंग राइट हियर कि वेदर रिस्पॉन्स इज ओके. दिस विल, इफ इट इज रिटर्न ट्रू, इफ इट इज ट्रू देन नो प्रॉब्लम. वन मोर थिंग वी हैव टू ऐड हियर, return response dot json, basically converting into JSON this file. You can just see the response. We are just checking whether it is success or not in this one file. If it is success, then all in good. We'll create a function, further functions, which will set list. Let me show you what search list, sorry. So search list के अंदर हमने कोई function एक create करना है. Search list के अंदर हमने क्या करना है, show lists. Like we'll create a function like this, and like let me just rename it to get list, something like this, get list or something, and I'll put it here, get list and show list. And in this it will just pass the data which we have got from here. So we'll create a new function which is show list. So basically I'll just use a bit of preoccupied code because यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हारा वो लग रहा है. Where it is API search. Yeah, so basically this is the entire function. I'll basically explain it to you what it does. इसमें नाम change है. We'll just rename it to search list, show list, sorry. So what is basically doing is जो हमारा search और list का element है, जो वो DOM tree के अंदर दिखाऊं कहाँ पर exist करता है, जो तुम्हारा search list है इसके अंदर जाके inner element
नल कर दो, बेसिकली वहाँ कुछ एग्जिस्ट ही ना करे। व्हाट वी डू देन इज डेटा के अंदर जाके जो बेसिकली हमारा ये डेटा हमको आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, उसके अंदर हर एक एंट्री के अंदर जाके यू बेसिकली क्रिएट अ न्यू डिविजन फॉर योर कोड है, एंड बेसिकली ऐड टैग्स, अ बिट ऑफ टैग्स, राइट, इनर HTML के अंदर जाके, और उसको अपेंड कर दो सर्च लिस्ट के अंदर। सो इफ wait a second, key up function get list, it'll get the list, and yeah, this form is correct. Something wrong with no network, yeah. एक सेकंड में यहाँ पर एक console.log data करके देख लेता हूँ whether we are getting the data or not. Okay, that's a problem. uh, Data for each. Okay, so there is a problem in data for each. What the problem is? Mhm. uh, Whether no. Let me just comment this out for a second and actually just go with this. So are we getting something closer? Not found. So A. Yeah, like the search for result array, we have gotten results. Yeah, we are getting some results, but it is in results folder, right? So this why is not working though. Show list data dot show list dot inner HTML data dot for each function data item constant. It should work. Superman, we've gotten, yeah, like it works now. So we've gotten a kind of a search list for our yeah. One more thing is whenever we call this data, we need to also clean the previous list. So we'll just list dot inner HTML. We'll just spice up the old list, and we are getting a proper list, like which is so similar to this thing. So it is all right. Okay, now we have to make it clickable. So like when we click it, these should update, right? Also, like as this data is not showing for current purposes, I'll just show body. I'll just call the show body function uh, as a hard code, so that we know what things we are doing, but it'll work, everything is fine. So Superman is working. Come on, net, yeah. So this is all working, right? Now we will go over what is left. Let's see. We have created a HTTP request. उसके अंदर से हमने सर्च बार कर लिया, हमने ये कर लिया, डिस्प्ले कर लिया. Now we have to basically call the API function and basically give request calls to it, right? Where's my, yeah. So अब यहाँ से basically हमने get data वाला function type of call करना है. सबसे पहले इसके अंदर एक event listener हम add कर लेंगे search form के अंदर, search list के अंदर, search list for each function search item dot add event listener
and we'll listen to an event that is click again, and we'll create a function. And this function basically would get data. What the heck? This will get data. ये get data हम एक new function बनाएंगे. This will basically our API call for getting all the data. We'll make it later, and we'll also pass in value of ID. जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना, इसके पर क्लिक करेंगे तो एक आईडी जनरेट होगी जिसकी वजह से हम दूसरी कॉल क्रिएट कर पाएंगे. सो हाउ विल वी गेट इट? विल बेसिकली पास एन इवेंट लिस्टनर, basically an event, right? So event dot target, it will select that element, and we'll just get its data set, which I told you in earlier also, and we'll get its ID. So we'll get no, we don't need like this way. Yeah, correct. We'll get a data set and we'll get its ID. So अगर मैं इसको console.log करूँ, console.log this entire part, so let me just open the console, and if I just write here Superman and I click on this, oh my god, what the error is saying. Search list.list is not a function. I have to again go to this thing, update list. Okay, so basically I didn't need to use this entirely at all. I just could have omitted this code part, put an event listener, and called it a day. So let's try now Superman. Yeah, it's getting it is giving us a correct ID. Also, this will get an ID in its input, and now again you have to create a function, a URL, basically जहाँ से हम उठाएंगे हमारा data. So we'll basically call it from here. This is basically a data. इसके अंदर you can read the docs if you want, like if you want to actually know about this API and all, you can actually read docs at this superapi.com. They're available there. So we'll just have this thing, and again we'll create a fetch request. We'll fetch from the URL item. This is similar to like a previous API request we made, so you don't have to worry about anything here. Just quickly code this part up, and then we'll come.
then we'll update the data. I will make one more this thing as update data function. We'll call it later on. And last one is we have to catch a function. Catch an error. Yeah. First of all, before doing this thing, let me just comment this out and actually see the data. So console.log our data, what we are getting. So we'll search here. Some issues again. Okay, spelling mistake. Yeah, everything's work. Look, Superman. And yeah, we're getting a response, we're getting all this information, and that's a good thing. So we'll just update data, create a new function, and we'll pass in data. I think so we are running out of time, but let's hopefully do it quickly. So now we'll create a function whose name is update data. It takes the value data, means its parameters are data, and now I'll tell you what part we have to actually update, right? Like let me just go to DOM back. इसमें देखोगे कि ये class names यहाँ दे रखे हैं. The power stat is a class name, biography is a class name, appearance and connection. These are basically um, uh, you know, basically calling for these elements right here, right? So we'll just update it through them. Like the first update we need to do is change the name at least. Okay, one more thing. After selecting this is not disappearing. So for that, I'll just in the click event. Where is the click event? Also do is search list dot inner HTML equals to, we'll just make it null, so that when we search for something, we get something, it just disappears away, right? A small thing. Now let's first of all update the name. So we'll go with document dot query selector, and we'll select name, and inner HTML we'll give the name data as it is JSON file. So we'll just give it this thing. So let's see if it works. Superman, yeah, it's working. Similarly we can do for image. So again, query selector. It's the ID is a bit complicated here, so that's why I've already referenced it. For my reference, I have actually added it right here. So let me just copy it. So this is a bit unusual syntax, you might think, but this is basically class name in which in HTML we are just putting an image, right? So let's go back to our app, go to Superman, check it, and yeah, we're getting an updated image of Superman. We have changed his name. Now the only thing remains is to change its attributes like stats and strengths. So we can go with, again, you have to follow the similar pattern. Yeah, you go to query selector, because we are in now power stats, so we'll just go with dot power stats, and its inner HTML would be let me just, this is the inner HTML part. So you can either even copy from here, like you can go to HTML CSS and just take up one of these elements. So this is power stats, so I'll just take this element. I have to just update this element, so I can just, you can copy here. I have to, because this was hard coded right here, I have to just change it to like taking the value from data. So data dot power stats dot first one was intelligence, right? So intelligence
intelligence, and we'll close it. And so now let me just see, like Superman's 100 right now. Superman, yeah, we got 94, we got updated one. Similarly, we have to copy, again and again do the same thing. Not this way, like this way, and continuously update it like with intelligence. Then second, I think so game was, let me just see what next game. First was intelligence, then it was strength. So we'll just update right here is strength and GTH, STRE, and GTH. So let's see if it updates. So you can just see strength is also updated. The one thing that is not updated is, wait a second. Come on, internet. Yeah, yeah. Oh, I think so. I got the mistake. What mistake was being made? Basically, there was some unwanted codes. That's why I thought, why isn't it showing the same name when I'm not changed it even? So yeah, so you can just see intelligence. It's undefined because I think so. I just STR STRENGDH. So I think so now it will be fixed. Yeah, so we are getting the strength also. So similarly you have to do for all the stats, and like all are similar, so there is nothing new or something. So इस करके हम थोड़ा इसको skip कर लेते हैं, and we'll just completely copy paste this entire thing. This part is coming from here to there. So basically again, like let me just give you overview कि इसके अंदर same चीज हो रही है जो हम पहले भी करना चाहते थे. Document called query selector, we are just selecting the power stats div, and we are just using inner HTML, and we are updating all the information in it. Li means list item, which you might not know about unordered list and ordered list. We are using unordered list, and in that we are using list items. That's basically it. And if we now go to our application which we have created and go to Superman and select Superman, we should get all its updated stats, right? These all stats, let me just show you, were given to us in this API. So like what is the ID for Superman? Like I'll search from here, right? We'll search Superman. So we are giving first this request, and we are getting a lot of Supermans. Which Superman do we want? So 195. So we'll just go with 195 ID. This is basically what we did in second part, and we got whatever we wanted. This is other one, Cyborg one. So let me just show you this one also. There you go. This one. We are getting these all information. We are just taking intelligence, and we just this is a get request, and basically we are just updating information based on this information. We are converting into JSON, and this updating the information this page, right? So we are pretty much done in this segment. What our app lacks right now is, let's see, we are almost done. There's something we need to update. Yeah, whenever we are starting the application, we are seeing the power stat page, but it is not highlighted. So let me just make sure it is highlighted.
whenever we start active. So we'll just start active as a जैसे ही पेज कभी भी पहली बार लोड होता है, we'll just have a set active page. So you can just see power start is always active, right? What else is left? I think so we are done with it. Yeah. So let me just rewind, like if anything is missing. We have created a focus and unfocus event. We have created an input bar. We have real time. We are checking for information. We are displaying it in input. We are using API to retrieve data, and we are almost done. Yeah. So this is the entire application we were supposed to build, and we have built the entire application. If you want the JavaScript code for this, I will later mention it in the comment section. So yeah, if you have any queries, do ask me into. Okay, happy birthday! Thank you so much. So if you have any queries, do ask me in comment section right now, and then we'll end the session. Vineet, yeah, bro. So I don't think so any more queries are there. Let me just roll out the outro, and thank you guys. See you later.